everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ है? अपने चेहरे तो दिखाओ मेरे को। Good morning. Good morning, everyone. हाय हफ्सा, गुड मॉर्निंग। Yes, good morning. Good morning. A very good morning to everyone. Nice to see you there. Oh, Hana is also here. Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Ayesha, how are you? Walaikum assalam, Miss Alia. Alhamdulillah. Hi Poonam. Hi Hi. Bhavna. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Kajal, hello. Good morning, Hi. darling. How are you doing? I'm good. How are you guys? All Hi, perfect. Kajal. Nice to see you here. हे भावना के देखो पटाखे लगे वहां पे। हाय काजल। भावना सॉक वी रॉक। Yeah. वैसे आज कोई स्पेशल नहीं लग रहा वहां पे। हाँ, स्पेशल नहीं लग रहा। डे है। हाँ, वही Happy मुंडी हिला birthday, रही है वो भावना। ऐसे 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 करके। मत बोल अभी। सॉरी भावना, आई कांट कंट्रोल। ऐसे मुझे पूरी प्रॉपर वार्निंग देके रखी है और ऐसे खबरदार जो बोली तो किसी को तुमने करके पूरी मुझे लगा ही था आयशा गुस्सा है आज, है ना? ऐसा गुस्सा नहीं है, मैं बहुत लेट उठी हूँ, तब ये ठीक नहीं थी मेरी। फिर भी तुम क्या लोगों हो के गया? सच धज के रुकी मैं, ताकि वो तुमको एक इम्प्रेशन आए ना कि आयशा ठीक है करके। पता नहीं, फ्रेंड्स के साथ इतना हैंग आउट कर दी ना कि एकदम रात रात तक तो नींद कम हो गई मेरे को। तो मैं हाँ, सही बना बात देती है, हूँ। ये तो है। हाँ, उसके दो लोग जो इधर ही बैठे हैं यहाँ पे ऊपर ऊपर ही है, जिन्होंने मेरी नींद बर्बाद करके रखी है। So we are going to wait for Reema, okay, another 7 minutes. तो उसके बाद में हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं 11:10 को। हाँ जान, काजल आप बताएं। ओनली गुड काजल, मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ, स्टूडेंट्स को, नो गुड अलाउड। No good and loud, is it? हाँ, वेरी गुड इज बेट। यस। हाय दीपा, रीबा, अरीफा, समीहा, सोनी, हेलो, वी वुड लव टू सी यू। Hi. और नाइस म्यूजिक वहां से, हाँ बच्चों के पास से। हाँ, इसीलिए I was on. नहीं, इट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन, इट्स फॉर होम मेकर्स, सो चलता है। ओह, वी गॉट समवन, आई एम एक्सपेक्टिंग वही होंगी करके। शी इज जॉइनिंग। बाय द वे, प्रिटी लग रहे हो गर्ल्स, सब लोग मस्त लग रहे हो मेरे को। ओह यस, कौन आ गए यहाँ पे? वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर लुकिंग फैब इन रेड। रेड तो मेरे को वैसे भी पिघला देता है कलर। Arey, red मेरा favorite है. Red and pinks. You will always see me in red and pinks. Wow, that's lovely. पिंक तो यहाँ पे दिख रही है ना। रिचा ने भी पिंक पहना है आज। हाँ? उसका फेवरेट ही मेरा पिंक है। favorite color है. मेरा pink. मेरी पूरी wardrobe is full with pink. Wow, and it suits you very well. हाँ, पिंक, पीच एंड ऑल दिस कलर्स वो रिचा के, उसकी जूतियां, चप्पल, सभी, चद्दर। Oh my God. एक टाइम था जब पिंक को बाबी फेस बोलती थी मैं, you know. आई नो, दैट्स राइट। Yeah. रीमा, हम लोग 5 मिनट वेट करते हैं, सबको ग्रीट करते हैं, हेलो हाय हो जाएगा, फिर जैसे 11:10 को हम लोग शुरू करेंगे। मेरा बच्चा झांक रहा है यूएई का झंडा। Sure. हाँ, हेलो बोल के चलो। Hi. Hello. ये क्या इतना अदब में। Hi, Miss Richa. हाँ, हाय मिस रिचा। Hello. ओ यू नो मिस Hi, रीमा। Rita. हाय मिस रीमा, याद पता है है मेरे सब। बच्चे ने कम, हाउ डू यू नो हर? Hi. व्हाट? I saw that. Oh, you saw the caption. नाम लिखा, नाम देखा है सुफियान ने नीचे कि वहां पे रीमा लिखा है करके। मैं वही सोच रही हूँ, मुझे लगा मेरा बच्चा सीक्रेटली मेरा फोन यूज कर रहा है, स्टेटस वगैरह चेक कर रहा है करके। Oh, she came to our house, that's right. पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में जी। रीमा did come to our house ना रीमा, मैं भूल गई। Yes. He is That's what more my daughter is observant saying. than you. Right. और बाकी सब बंद करे हुए हैं, दिया, सोनी, रिबा, हफ्सा, आरिफा, दीपा, लक्ष्मी, हाय,
अपने चेहरे दिखाओ. There, Sony is here, Diya is here. Hi Reema. Happy birthday Bhavna. Happy birthday, Bhavna. दिया Happy मेरे birthday, को शुरू भावना. करने का था वो गाना गा के. मेरे बेसुरे गाले गले से. नहीं, रिचा है ना आज हमारे लिए गाने के लिए. Miss Bhavna's birthday. Yes. Happy birthday. He said happy birthday. Thank you, Sufyan. So sweet of you. अभी निकलो ध्यान से. चॉकलेट लाएंगा क्या कहो? हाँ, चॉकलेट अलाउड नहीं है यहाँ पे सुफियान. Okay, so another 3 minutes तुम लोग गपशप करो. Hi अमीना. अमीना नाज क्रिएशंस लिखा हुआ है. Girls, just a moment, okay? I'm here. How was your trip, Richa? Yeah, it was really good. Yeah, बहुत अच्छा था. पूरा full tanned. अभी बहुत मुश्किल से 6 ये days में tan है, tanning you हो गई है. haven't seen me. Yes, I was Looking tanned by as finishing one task. What about you? तो आपका कैसा रहा trip? It was good. मैं एक्चुअली टैंड दिख रही हूँ. देख अभी तक पील ऑफ हो रहा है सारा. नहीं, अब तो नहीं दिख रहा. अब तो निकल गया है लग रहा है. हाँ, दोनों का. Fun. It was like we went back to college days, you know. We actually went back to college days. Seriously यार, बहुत मजा आया. बट जब तक टैनिंग ना हो तो लगता नहीं है ना कि घूम के आए हैं. तो टैनिंग तो मैंडेटरी हो जाती है. इसीलिए तो लोगों मैंने ने कोई वो भी नहीं दिया मॉडल्स ना? की फोटो डाली ही नहीं है क्योंकि मैं ऐसा लग रही हूँ जैसे यू नो आई एम एन अफ्रीकन नेटिव एक्चुअली. नहीं डालो डालो. लगे तो घूमने गए और क्या. ये क्यों नहीं बताते तुम लोगों ने हैट वगैरह नहीं लिया और सनस्क्रीन लोशन नहीं लेके गए करके? अरे खाली फुकट लगाया में. था बट यार वी वर इन पूल एंड सी लाइक फॉर 8-9 hours. तो फ्रॉग सनस्क्रीन भी वाला क्या वो करेगा है ना यार. अपने को. मैं भी गई थी एक बार फर्स्ट टाइम. आई डिडंट नो कि वो सभी फर्स्ट टाइम जब स्टेकेशन था. आई एक्चुअली वेंट और सिर्फ पानी में पूल में ऐसा लग रहा था कि मैं पानी की इतनी डिप्राइव्ड हो गई थी और पानी में ही बैठ गई थी मेंढक के जैसा पूरे टाइम पे. हाँ और लिटरली. छिलके निकल और रहे बॉडी एकदम में से पूरे. यंगस्टर मूड ना. हाँ Yes, नहीं एकदम we felt यंगस्टर like मूड ऐसा ही में लग थे रहा ना था आप कि लोग लोग. मेंढक ही बन गए हैं. पूरा दिन पूल से आते हैं नहाते हैं फिर पूल में जाते हैं फिर समुद्र में जाते हैं फिर नहाते हैं. यही चल रहा था. दिस वाज ऑल वी डिड फॉर 5-6 days. that's nice. In a way it's nice. अपने को वो चाहिए मीठा. That's fun, no, to Look explore. here. हमारे साथ कौन है रीमा के साथ? छोटू जू. Hi आज इनको everybody. छुट्टी Riva है. wanted to say hello. Hi say Riva. hi. Riva is always curious to मेरी Zoom calls होती है. So she likes to हाँ, attend them. बिंदास बिंदास रखे वहां पे रीवा को. रीवा ये रीमा आपकी तरह दिखती है रीवा ना? हाँ, मैं ये छोटी रीमा है. Yeah, I used to look like her when I was 3. दिख रहा है वहां Yeah, पे. yeah, छोटा she's कॉपी actually- कार्बन कॉपी टाइप में नीचे. कार्बन हाँ, बड़ी कॉपी. मुंडी. हाँ, छोटी मुंडी. क्या बोला वो? Her name is Riva. हाँ, रीवा. रीवा रीवा. रीवा. Okay, नाम भी that's वैसे ही nice. रखे हैं. Yeah, Riva. हाँ एक्चुअली. राइम करे मम्मी के साथ और एलिटरेट भी हो जाए. सभी बिगिनिंग एंडिंग सब सेम. बीच में एक Yeah, लेटर चेंज easy to करती है. remember ना. Easy to हाँ. remember. हाँ, Riva, सही है. lovely name. Very nice. राइट. तो आई थिंक ज्वाइन हो गए हैं काफी लोग. जो होंगे आगे होते रहेंगे. एनीवेज द सेशन इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड. सो हम लोग शुरू करते हैं. ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले. सो हाय रीमा, गुड मॉर्निंग. और रीमा के बारे में हम क्या ही बताएं. रीमा तो वैसे भी हमारी फेमस पर्सनालिटी है बट फिर भी 5 शब्द रीमा के लिए. आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. हाय अल्लाह, क्या दिख गया तुमको मेरा? पूरी मीटिंग्स दिख गए. There it is. So yes guys, today's guest speaker is none other than Miss Reema Mahajan. She is the founder of Indian Women in Dubai and an extraordinary lady, extraordinarily gorgeous. सब कुछ है, वो multi talented है. इतनी छोटा पैक बड़ा धमाका टाइप्स पूरा जो चाहिए तुमको रीमा में है. एंड मोर ओवर जितनी भी टैलेंटेड हो, जितनी भी स्किल्ड हो, शी इज अ वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. एंड दैट इज वन फैक्टर जो मेरे को इतना पसंद है रीमा का कि यू नो मैं उसकी पागल फैन हूँ.
And yes, there is no conversation अगर मुझे IWD का मिला या कोई भी मिला wherein I have to share my inspirational story या फिर मेरे लाइफ के बारे में बताना है, then रीमा के बारे में जिक्र होता ही है, वो कहीं पे भी हो. और and many of you guys already know कि मैं रीमा का नाम इतना यूज करती हूँ मेरे लाइफ में भी, because yes, रहा है रीमा का हाथ जो मैं हूँ अभी, उसका वो you know she gave me a chance to shine in my career. So yes. तो रीमा अभी आगे जाते हैं and I would love to hear more from you. उसके पहले हम अभी हमारा सुनते हैं आपका इंट्रोडक्शन. So a little bit about guest speaker रीमा महाजन. So इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. So Reema Mahajan itself is a brand. She's the founder of Dubai's largest women-only community group, Indian Women in Dubai. Also well known as IWD and a Dubai-based lifestyle influencer too. Reema is an IIT IIM graduate with experience of international management consulting, but she decided to follow her passion for working with women. Her passionate agenda is #women supporting women. Her IWD group currently has 40,000 plus Indian women in their network. And now 42,000, guys. Yeah, PPT 2 हफ्ते पहले बनी थी. So 42,000 to be precise. It is a social and business platform to empower women-led businesses. देखो इतना है और है उनके बारे में. You have to know more about her. Yes, Miss Alia? Yes, thank you, Ayesha. Good morning, everyone. Miss Reema, though I have not met you personally, लेकिन being an IWD member, आपको मैं follow करती हूँ, तो I have got to know lots of things about you online. Now back to the details of Miss Reema. She has been featured on leading radio channels and newspapers, including Gulf News, Khalij Times, and Filmfare magazine. She is a recipient of multiple awards, including Inspiring Woman of the Year 2021. Reema is blessed with 2 lovely kids aged 3 and 6. A super accommodative husband who supports her thought of empowering women. That's really great. Yes. She tries to spend quality time with her little ones and simultaneously lead Indian women in Dubai. That's so lovely. Now over to Richa. And before that, Miss Alia, you know, everyone tries working hard अपने professional life में और personal life में, but most of us cannot really balance both of it. You know, it's very difficult कि personal और professional line के बीच में और life के बीच में एक line draw करना. And I've seen Reema ना वो कितना diligently वो follow करती है. एक बार ऐसा भी था, मैंने फोन किया, बोलती है आयशा ये इतना टाइम है ना मैं इनके साथ रहूंगी, इनको बेड टाइम भी है और उसके बाद मैं करूंगी. And I was like, wow, this, you know, this is cool. तुम ले लो अपना टाइम, फिर मिलते हैं हम लोग. You know, this is something like मेरे को वहां से इंस्पिरेशन मिला है ये चीज का भी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे मैनेज करना चाहिए. And that is, yes, time management is the best, and I believe that is the key to success. And you know, Ayesha, one more thing, irrespective of your working or no, you have to allot some time for your family, क्योंकि once children grow, then the connectivity थोड़ी सी अपार्ट हो जाती. तो इसलिए बच्चों का बचपन नहीं खोना चाहिए हमने. We should really have quality time, as Miss Reema says. That's really needful. That's true. That's true. Yes. Glad to have you here, Miss Reema. You're actually a role model, you know, for all of us. So we're looking up to you. So much to learn. Yeah. So time management is the key to success. Reema incorporates the right balance of time between her family and work. Weekends are reserved exclusively for her family. That's lovely. Reema's life mantra is, when women support each other, incredible things happen. She is on a mission to create opportunities for women to take the initiative and showcase their talent as well as creativity to the world. Commendable, commendable. We look up to you, Miss Reema. So much to learn. And we see, you know, so much. इतना आपका देखते रहते हैं ना, इतना अच्छा लगता है. Really want to meet you in person. Seriously, I'm looking forward. Inshallah, someday. And a foreign land में इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक छोटी बात नहीं होती है. बहुत कम लोग भी करते हैं उतना आगे जाके. किसी के बारे में selflessly सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, which Reema does like incredibly well. And she represented IWD अपने इंडियन एक्सपो पे यहाँ पे. So you can see the pictures. मैं थोड़े pictures दिखाती हूँ आपको, तो रीमा के थोड़े काम के. हमारी काजल भी है उसमें. I believe काजल is from the Pink Squad. Yes. Yeah.
तो हाँ, और मुझे नहीं मालूम और कौन कौन है। काजल तो मैं जानती हूँ, तो मैंने काजल को देखा यहाँ पे फोटो में भी अभी। एंड देयर यू गो सम मोर। मतलब रीमा के अचीवमेंट ये बहुत कम है, हाँ बहुत कम है। मैंने बोला पीपीटी में स्लाइड्स कम है, तो हमने बहुत कम डाले हैं। इससे भी बहुत बेइंतहा ज्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं, और लोग जिस तरह प्यार करते हैं रीमा को, दैट इज लाइक वाओ। मतलब बहुत सामने आके काफी लोग करते हैं ना प्यार, अपने आप को सामने बोलेंगे, they'll boast about you, appreciate you, बट इमेजिन करो लोग तुम्हारे बारे में पीछे भी वही बात बोले, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है एक अचीवमेंट किसी के लिए। Exactly. हाँ, हमारी That's रीवा really इधर है, good. छोटी सी, उसने आई थिंक डांस किया था या रैंप वॉक किया था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने पिक्चर देखी थी The इनकी। one at the extreme right. नहीं नहीं, इधर बीच में blue ब्लू वाले, ब्लू। second ही last. Love. बड़ी think क्यूट है second. माशाल्लाह से वो। ये हमारी अर्पिता है, शी इज द एडमिन ऑफ इंडियन वुमेन दुबई। आई डोंट नो इफ शी इज हियर टुडे। ये है अभी अपना। सो गाइज देखो, ये है हमारे रीमा के बारे में। रीमा, तुम्हारे बारे में जितना बोलूं उतना कम है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम अ बिग फैन। तुमको अगर बोलेंगे ना कोई पागल फैन कोई है तो आयशा शेख बोल देना। और मेरी गर्ल्स को भी मैं बोलती हूँ, मेरी टीम में सबको मालूम है रीमा महाजन के बारे में। तो इतना ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई फॉलो योर फुटस्टेप्स टू। और मुझे लगता है कि जिस तरह तुम सेल्फलेसली काम करती हो लोगों के लिए, वो है शायद मेरे को तुमको अटैच करता है वहां पे, कि ये बंदी है ऐसी जो दूसरों के बारे में सोचती है करके। बहुत कम लोग सोचते हैं रीमा जैसे तुम सोचती हो। एंड अभी आई वांट टू हियर, एंड आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स ओवर हियर वुड वांट टू हियर मोर फ्रॉम यू, आपके जर्नी के बारे में, आपके स्ट्रगल्स के बारे में, बिकॉज बीइंग रीमा महाजन इज नॉट इजी, being the founder of IWD is not easy। दिखता है ये बड़ा स्मूथ से जा रही है, रील्स कर रही है, सब नीटली कर रही है, कोलैब कर रही है, इट इज नॉट इजी जो करती है। हम लोग 1 घंटा इंस्टाग्राम में बैठे हैं, फिर लगता है कि पूरा काम रुक गया है, ये बंदी पूरा मैनेज कर रही है। सो देयर इज लॉट फॉर अस टू नो। सो रीमा, ओवर टू यू डार्लिंग। Thank you so much, Ayesha मेरी जान, thank you so much. I think Faith had it that we met, right? जब Indian Women Dubai Awards हुए, and it's been like 7-8 months now, and I think I have seen you growing so beautifully. So congratulations to Ayesha first. Love you. And a big thank you to the whole team of Indian Women, this Be Happy Homemakers. I think a lot of you are from Indian Women in Dubai. I recognize We are you on all, my lot of you नहीं, also. पूरी battalion। Almost all. Almost all. So must, yeah. I think moments like these make me stop and think कि wow, if you guys are inviting me, मैंने कुछ तो किया होगा, and that is the beautiful moment about it, which takes me back to my roots, right? I will tell you a little bit of my journey, my story, my background, but equally this session is completely open. Please feel free to ask me questions. Some of you will relate to it because I'm very normal, ordinary Indian girl. I have gone through everything an Indian girl goes through, and I think you'll find similarities in my journey and your journey at some point in my story. So let me start from the very basics. I come from a town called Chandigarh. सबने सुना होगा, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर शहर है. It's in the lap of Himalayas. I'm sure if somebody's gone to Shimla sometime, they would have stopped by in Chandigarh. It's called the City Beautiful. I come from a very normal middle class family. My dad was an advocate. My mom was a housewife. I would say I was a good girl 99% of the time. थोड़ा बहुत सबका चलता है, but I was touch wood, I don't think मैंने अपने parents को कभी इतना तंग किया है. But education was always important in my family, and I'll tell you why. Because my dad is a self-made man, and he's kind of my biggest inspiration. My papa was like 8 brothers and sisters. My dad paid for his education from 6th class. And when we hear his stories, he's the only one educated, like most educated in his whole family. And he's MA LLB now. He's a senior advocate now. He's a chief minister. He's a minister in the Haryana government. So he has a journey where nobody knew him to somebody. Everybody knows him in our town now. And he used to tell us कि वो सुबह स्कूल जाते थे, शाम को फैक्ट्री जाते थे, बिस्किट्स की फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ पे आटे की बिस्किट्स बनते थे. So my dad has paid for his education from 6th class to the LLB. Very inspiring. And we come from those backgrounds. But touch wood, when I was born, things got better. Papa was getting settled.
over time, but he is my inspiration in that sense. And given I have seen how much education helped him grow, I think education was very important. So I was, पढ़ाई में अच्छे थे, 10th class top किया, 12th class top किया. उसके बाद जब 10th class top किया तो 2 ही options होती हैं इंडिया में. I think a lot of people will relate. या तो आप engineering करते हो या आप medical करते हो, तो आप bio लेते हो या आप maths लेते हो. And I'm one of those जो खून नहीं देख सकते हैं. If you have a cut, I'll be like, oh my god, don't show me. मैं खुद ही बेहोश हो जाऊंगी आपके साथ. I have actually जब किसी का blood test होता है तो मैं खुद ही बेहोश हुई हूँ when my Amit's blood test was being taken. So I can't see blood at all. So bio was not an option. So engineering कर लिया. Engineering में जब I had no idea because there is no engineer from my family behind before this. Most of them have their own small businesses. Papa was an advocate. तो IIT का एग्जाम दे दिया क्योंकि सब देते हैं. And IIT में हो भी गया. And but हमारे घर से कभी कोई लड़की घर छोड़कर she's never gone to hostel. So जब IIT Delhi में admission हो गया, there was a point where my dad was like, you're not going because हमारे घर से लड़कियां नहीं जाती हैं. मेरे को पंजाब टेक होता है चंडीगढ़ में. It's one of the top colleges in चंडीगढ़. पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं. वहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस मिला था. IIT Delhi में मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिला था. So Papa's like, do computer science, it's better, don't go to IIT Delhi. And I think honestly, we did not know what we are missing at that point. So there was one uncle who changed my life, जिनका बेटा textile engineering करने गया था IIT Delhi में, and he was like, you will never find options like you get in IIT Delhi. So you have to send your girl to IIT Delhi. So thanks, आपकी life में फरिश्ते आते हैं, angels आते हैं जो एकदम आपकी life change कर देते हैं. And that one dinner with that uncle kind of changed my life. Because when I went to IIT Delhi, बहुत सारी opportunities मिली. First time घर छोड़ा था. I was that normal girl at 17, lots to learn. I was always a very conservative girl, कभी कोई boyfriends नहीं हुए थे. Honestly, I was very simple. And suddenly मैं दिल्ली की लड़कियों को मिलती हूँ. So, complete change. I actually, because I was in a convent only girls school. तो मैंने कभी लड़कों से बात भी नहीं की थी. और मैं सिर्फ पढ़ती थी उससे पहले. तो बहुत learnings थी उस sense में. बहुत enjoy किया. IIT Delhi, met my husband there in the last year. 4 साल बहुत पढ़ाई की, 5वें साल बहुत मस्ती की. And then after that we did, when IIT finished, as with any normal family, my parents said you need to get married. But Amit was not ready. I was not ready. I wanted to figure out my career. So I told them, give me 2 years and I want to do an MBA. And MBA के बाद आप जो कहोगे मैं कर लूँगी. So that was the deal I actually struck with my parents because, I come from that family where, लड़कियों को काम नहीं कराते हैं types. So I thankfully CAT exam clear हो गया and I made it to IIM Bangalore. And then for next step, Delhi से अब हमारी लड़की Bangalore जा रही है. So, I've had those conversations at home that you are going far and far off. So went to Bangalore, had a great, amazing 2 years, did my MBA there. Made some amazing friends for life. They're still my best friends. And as soon as IIM Bangalore finished, I had to get married. There was this one conversation I had with my dad कि बेटा अब तुम जॉब नहीं करोगी, so तुम्हारी तो शादी हो रही है, तुम बता दो किससे करनी है types. It was a conversation, or there's a guy who's coming to meet me. So I called Amit in London and I was like, मेरी शादी तो हो रही है, आपको करनी है तो आप बता दो, नहीं तो मेरी तो हो जाएगी. So that's how we it is like that. I always joke to Amit, you've never proposed me in life, but he was like, I could not let you go. So we managed to get married as soon as I finished my MBA. So, I'm sure a lot of you will relate to it because I know Ayesha तुम्हारी भी almost child marriage हुई है. Kajal is another one, right? बहुत जल्दी marriage हुई है, but you go with your family and you go with the circumstances, right? Right. So that's kind of a story. उसके बाद यार touchwood, got into a very supportive family. My mom-in-law was very supportive of me working. Amit was always supportive. He's like, घर पे तो मत बैठ. So I've had a very brilliant, successful career of management consulting. And I think by nature, I'm very hardworking, so I can, get my way through and I can make progress. So I was doing really well in management consulting.
We were in London for about 9 years before we moved to Dubai in 2017. And when we moved here in Dubai, Reema was born in 2018, but I still continued to work. So I had a corporate career. When I landed in Dubai, जो मुझे अभी जानते हैं, I'm a very social person, you know. I like to meet people. I like to make friends. I will love to just go out for a dinner with my girls. It's just a nice outing for me, and I feel everybody needs a girl gang, because you know, husbands के friends बहुत अच्छे होते हैं, family friends बहुत अच्छे होते हैं, but you need your own girls, and I definitely need my own girls. So I always call them my girls. You know, you will always see me tagging them as meet my girls, because I feel my connection to them. You know, I invest in them, I love them, and they're mine. तो वो मेरा थोड़ा protective feeling भी रहता है. You know, I'm protective towards Kajal, I'm protective towards Ayesha, I'm protective towards Bhavna, because I've met you girls and I feel you are kind of mine. So I have that connection with all of you. And you know, तो वो था. तो Dubai में when I landed, I did not know anybody. I knew 3-4 people, but everybody's busy in their own life, so उनसे भी इतना कुछ मिला नहीं. So one day I just made a Facebook group and I added the 5-10 people who I knew. And by evening, the Facebook grew to 50 people. Wow. And that's when we decided to have a first coffee meetup. And from the coffee meetup, it was Christmas meetup, Diwali meetup, धीरे धीरे करके वो group चल रहा था. मैं अपनी job कर रही थी. I was still into corporate career, you know, trying to balance both. Weekends पे once in a while, once a month, we would do an IWD activity. But then, you know, it was kind of going on. फिर COVID हुआ. And COVID changed a lot of the lives. It changed mine also. And I think COVID में when I took a step back, and it gave me the chance to be home, right? Because इससे पहले I've always worked. So I've had like सुबह बच्चे देखने हैं, फिर office जाना है, फिर घर वापस आना है, फिर काम करना है. So when I stepped back in COVID and worked from home, which is when I found out how much mental stress, physical stress, financial stress was there in the system due to COVID. And I got a chance to speak to a lot of women, and I could see people needed an out. And that out became IWD. And COVID ke dauran, I did a lot for 20 weeks back to back. For almost 5 months, we were doing absolutely free sessions. That's how I met Kajal. Kajal used to host Bollywood and Takshri for us during COVID. And, you know, we for 20 weeks back to back, I brought in fitness instructors, yoga instructors, meditation gurus. जो भी मुझे मिलता था, whoever was willing to take a free session at that point, I was like, आप आ जाओ. You know, women need you. And that's how IWD, I think the real journey of IWD started. Because the feedback was very important. People would come back and tell me how they are benefiting from the community and how they're feeling connected to the community. And I think that positive feedback, the positive momentum actually motivated me more and more. So that is, I always say COVID changed lives. It changed my life, and it changed from my corporate career to what I do today. And my true calling is women supporting women. I love doing women-only events. IWD events are women-only events. We pull it off right from the conception stage of the event to execution stage to everybody who goes on the stage is the women. You know, so that is, and I believe in the power of women coming together. And I think I'm on a mission to prove to the world that women can work together. क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है, right? Girls do not support each other. I think the right girls support each other, and we can all grow together. Yes. Because everybody is growing. Yes. So I'll open it up before I continue, but I want to hear anybody's thoughts, basically, if anybody has anything. मेरे को लगता है सबको सुनना ही है. Your journey has been amazing, Reema, and I still remember the day when you prompted me to start my own thing, and I will forever be thankful to you, because शायद उस दिन तुमने नहीं बोला होता तो I wouldn't have given it second thoughts, and I would have continued with the same organization where I was not happy. Yes, I think yours prompting was something which made me think, take a step back and start, and gave me that. Yes. कि ठीक है यार, देखा जाएगा, चला तो चला, नहीं चला तो I can always go back to doing what I was doing.
Absolutely. Yeah, it I was. think you are doing such a brilliant job today, Bhavna. I think the whole town knows that. And it was kind of hidden somewhere, right? So I did nothing. I just pulled it off and I was like, Karo. Yeah. And you won't believe people who work with me know how I work. मुझे कोई idea देता है तो मैं उसको बोलती हूँ करो. So no, Now it is as I simple as know that. that. I can be your backbone. I can stand behind you and push you, but you are still the face of it. So Pink Squad में हमारे ऐसे होता है जब हमारा कोई event होता है कुछ हम सोचते हैं brainstorming कर रहे होते हैं तो कह रहे ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे. मैं करो. So you know so that is the whole idea. And I would just say like and share that there are 3 learnings or 3 tips if anybody wants to take away from my journey, which I implement today and always. And my first one is follow your dreams. I think I took a sabbatical from my corporate job and I told my boss us time pe कि I'm going away for 3 months. This was September 1, 2020. And I said, us time pe IWD was, you know, people knew about IWD. I was focused on it, but job hota hai aur, you know, साथ में एक group hota hai तो नहीं manage hota hai. I felt it needed more of my energy. So September 1, 2020 is when I had that conversation that I'm going to take a 3-month sabbatical from my very good paying corporate job. And I'll give myself 3 months to create something in the idea of IWD because I believed it. But मुझे नहीं पता था कि बनेगा नहीं बनेगा कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं. And I said, I'll take 3 months off. If I can create something out of this community, great. Otherwise, I'll go back to my corporate job. So there was always a plan B. But it was my dream, you know. So my first rule of life is follow your dreams. And वो 3 months हो गए, and I never looked back. I just sent in my resignation. So तो कभी भी anybody listening to this, I think तुम्हें अगर लगता है ना कि मुझे शायद I have that edge, I want to do that thing in my life, it's my idea, but मुझे पता नहीं कैसे होगा, just follow your dreams. Something will happen. ये Alchemist का बहुत famous quote है, मेरा नहीं है, but when you want something from your heart, the universe conspires to get you, get it to you, you know. So you to get you that, like, really it's absolutely going and following your dreams, and और लोग साथ में जुड़ते जाएंगे आपके, you know, the good ones will join you in the journey, and it's a journey we all go on together. So absolutely, I mean, if there are more people like Bhavna listening to this where you've had an idea you want to do, yaar karo, I would say IWD hai na, we will support you in any way we can, basically. Yeah, and I'm always you know, thankful to IWD, Reema, and also Happy Homemakers because they were the ones, Ayesha especially, my God, मतलब वो literally मुझे धक्का मारती रहती है, and you know, she's like ये करो ये करो ये करो, and she was the one who was like, let's do a session, and I was like, I've never done it before. I am not even a person who likes to be online. तो बोली नहीं करो करो, and she gave me a chance and she pushed me and she keeps pushing me. My God, how much. I think एक time आएगा जब वो भी give up ही कर देगी. No, you're doing कभी amazing. कभी नहीं गिव अप तो कभी नहीं करेंगे. ये जैसे बोलते हैं ना, वो रीमा जैसे सोचती है कि माई गर्ल्स काइंड ऑफ, ये मेरा फंडा भी है, तभी मैं रीमा से इतना जुड़ गई हूँ क्योंकि वो रीमा मुझे ऐसा काफी हद तक लगा कि ये मेरे जैसे सोचती है ये लड़की पूरा, और ये जितना कर रही है. Yes, true. You know, two guys have been really fundamental in my life, actually changing my life at this stage when I was really not sure, you know, because I wanted to do this just because कि 2 साल बाद मेरे दोनों बच्चे चले जाएंगे, then what? अभी तो बहुत सारा what है. अभी भावना सुन तो फेमस हो गई है, सेलिब्रिटी काउंसलर बन गई है हमारी वो, माशाल्लाह से. तो then what, कुछ नहीं, अभी देख लेना. Absolutely. अभी तो पार्टी शुरू हुई है भावना. We have bigger, we have more students, and I think the work you're doing is brilliant, right? अगर आप किसी बच्चे को गाइड कर सकते हो कि कहाँ वो बच्चा ग्रो कर सकता है, कौन से curriculum is right for that kid, you're actually influencing the life of that kid. Absolutely. You're making there a strong base for them. And as I said in the very beginning, right, education is very important. Yes, it is. For giving you that base to grow. Obviously, you need to be smart. Obviously, you need to work hard. But education से वो base आता है, for sure.
And you are the biggest influencer in that. So आपका work तो इतना amazing है in that sense that you are guiding kids to be on the right track. एंड यूनिक भी है ना, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा काउंसलिंग भी। और जिस पेशेंस के साथ ये करती है ना, अल्लाह इसका 10 मिनट का रहेगा, वो 1 मिनट पेरेंट को पूरा 1 घंटा पूरा देंगे पेरेंट को पूरा समझाने के लिए। पेरेंट भी बोलेगा 10 मिनट में 1 घंटे का सेशन दिया तुमने मेरे को। तो ये हद बेहद जाके ना बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी जाके करती है भावना का। तो दैट इज समथिंग आई अडोर अबाउट मेरा हर। मोटो ये रहता है कि आई विल नेवर एंड द सेशन टिल देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट, कि भाई जब तक वो एक एक क्वेश्चन सॉर्ट नहीं हो जाता, इवन इफ समटाइम्स माय सेशंस गो अप टू 4 आवर्स, जब या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होता है, एंड तो बिकॉज इट्स नॉट इजी फॉर द पेरेंट्स टू टेक आउट टाइम एंड कम ऑल द वे, सो आई नेवर फिनिश माय सेशन till every question is sorted. And thanks to you guys, this had been my passion for long time, and you guys made it possible for me to start my own thing where I can be flexible enough to run at a moment's notice to my parents back in Delhi. That is what you guys made it possible. So thank you so much. Thank you. We love you, Bhavna. एंड वो करती रहोगे। अभी मालूम है मुझे लगता है तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी, ऑटोग्राफ की भी बाद में काउंसलर के लिए। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से भावना हमारी प्रोग्रेस कर रही है और नोन हो रही है, तो माशाल्लाह से वी रियली विश द बेस्ट तुम्हारे लिए। And it becomes really, जब एक्चुअली मुझे कोई पेरेंट कॉल करके बोलता है ना, हमको कहीं कहीं से आपका नाम और नंबर मिला, एंड दैट इज द मोमेंट आई थैंक रीमा, IWD एंड आयशा एंड हैप्पी होममेकर्स कि माय गॉड यू गाइस मेड इट पॉसिबल कि पीपल एक्चुअली नो मी। IWD तो वैसे भी this is really heartfelt, that thank you to all of you for making this possible. We love you. And by the way, IWD के बारे में बोलना जरूरत नहीं, मेरे को कॉल्स आते हैं। आप तो मालूम हो, हमने देखा है आपको IWD में, आपको हमने रीमा के साथ देखा है। You आयशा शेख, मैं आयशा बोलती हूँ, और रीमा गिफ्ट हूँ आयशा शेख। मैं बोली हाय अल्लाह, आयशा शेख, मेरा ड्रीम था अभी शेख के नाम से जानना। असली शेख तो नहीं हूँ, बट जो भी सरनेम है हमारा, असली शेख से कम भी नहीं हो तुम। हाँ, दैट इज स्वीट। तो जान, अभी रीमा, तो एक तो आपने हमको ये बताया कि फॉलो योर ड्रीम्स, राइट? और इसमें ये है फॉलो, जब व्हेन यू फॉलो योर ड्रीम्स, स्पेशली लाइक अभी आपने जब बोला कि यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम्स, सबके ड्रीम्स होते हैं, लगता है सबको, लेकिन बाहर वाले जितना भी बोले, अनलेस यू हैव दैट इन योरसेल्फ, अनलेस यू बिलीव इन योरसेल्फ, वो आगे कुछ बढ़ने वाला नहीं ड्रीम। लाइक द वे यू डिड इट, यू बिलीव इन योरसेल्फ। मेरे को मालूम है इसका कुछ करना है, और उसका पर्पस भी है, किसी को हेल्प करना है आपको, उसके साथ मुझे भी ग्रो करना है, ये वाला फंडा लेके आप उतरे, एंड देन यू बिलीव। तो आज IWD उस हद तक पहुंच गया। हमने देखा है अभी कि IWD कहाँ है, और मेरे को लगता है कि वो आगे जाने वाला है। अल्लाह, मेरे को तो नंबर्स भी कि मैं नहीं बोल सकती कितना होगा, तो अभी मेरे को लगता नहीं कि यू शुड हैव इट IWD, यू शुड थिंक ऑफ अनदर नेम, तो क्योंकि वो ग्लोबल होने वाला है इंशाल्लाह समडे। या आई थिंक भगवान का रहा तो कुछ ग्लोबल भी करेंगे यार, व्हाई नॉट? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इट्स ऑब्वियसली एब्सोल्युटली माय ड्रीम टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफ वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, at least Indian expat women abroad, why not? मतलब मुझे आपने ऑलरेडी बोलता है दुबई में कर रहे हो, जाओ सिंगापुर जाओ, जाओ लंदन जाओ, but why not? We will go one day hopefully, भगवान का नाम लेके करते हैं। Yes, और रीमा, मैंने एक कमेंट पढ़ा था कल या परसों, मालूम नहीं, is it only Indian women in Dubai or why not Indian women in Abu Dhabi? So I think you love to that. That was a good one. yes, absolutely. I think so. यार ये शुरू दुबई से हुआ था, that is the home, right? And I am based in Dubai, of course. But we have enough. अब तो मैं UAE भी बोलती हूँ अपने introduction में, because we have a lot of women from Sharjah, from Abu Dhabi, from a lot of other. मेरे को तो रसल अल खीमा से भी messages आते हैं. And actually there were some people, आप आओगी ना स्टेकेशन पे तो हमारे यहाँ कॉफी मीटअप करना, हम करेंगे। because जब मैं स्टेकेशन पे आऊंगी तो वो मेरा फैमिली टाइम है, मैं अलग से आती हूँ आपके लिए। There were people who said, I want to do a fashion show, but I'm based in Ras Al Khaimah. Can you come and do a fashion show here, basically? So I think we are Indian women in UAE now, and we are open to all women who are supportive. Yeah, the whole idea is मेरे को geography से नहीं bound करना है इसको. Geography does not define anything. मेरे को thought से bound करना है. So any Indian women who supports the idea of women supporting women, for me she is welcome on the platform, because that's what the platform is all about. So that's the whole idea. तो मैंने पहला बोला था follow your dreams, follow your passion. My second one and my second rule which I follow is surround yourself with the right people. You know,
आपकी जर्नी में आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे. You will find people who think like you, who believe in you, believe in your objective, believe in your passion, and you will find some people who are not aligned to the journey. I think be quick to move on and find that group of people जिनके साथ आप काम कर सकते हो. सिस्टम में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रखो, सब ग्रो करेंगे. And you know, मैं कोई भी इवेंट करती हूँ यार, मैं अकेले नहीं करती हूँ. There are so many people who come together to put together that event. Maybe I am the face of the event, but it never happens alone. मैं इवेंट अनाउंस करती हूँ तो मैं लोगों को मैसेज करना चालू कर देती हूँ. I need you for this event, I need you for this event, I need help for this event. It's never alone, and I don't think कोई भी अकेला चला है तो कोई जीता है. I think आप सबके साथ चलोगे, you find your girl gang, you are more likely to grow together, and our complete mission is we all grow together. जैसे like I think I said already, right, my girls का फंडा, it is absolutely my girls का फंडा. So, and when you find your girls, hold them tight, you know, hold them close to your heart. You have to invest time in them, you have to give your love to them, and you will get much more in return. मेरे साथ तो ऐसे ही होता है. So that is my second funda, I think, which I follow very practically. मतलब there is complete practical out there basically. Totally. ये चीज आपने सही बोली है रीमा. Hi, Reema. Surrounding yourself with the Hi. right people. Hi, Miss Sunita, she's here. Hi. Hi. And very nice to see you. Always heard about you from Ayesha. I mean, it's like बोलते ना praises की लंबी कतार होती है, and it's really nice to hear that from her, because I know that whatever she says, she really means it. You know, it's not like बोलना है तो बोल दिया, ऐसे नहीं होता है. Like she rightly said, you know, जिनके बारे में आप सामने नहीं, उनके पीछे अच्छा बोलें, so that's your achievement. I mean, truly very well said, Ayesha. I mean, really, that's the true celebration of, you know, your victory and things. So nice to see you. So, ये तो है, और thank you. No, I would like to ask you something, you know, like when you said rightly, you know, be surrounded with the right people. If I may just ask you, I mean, आपके life में ऐसा क्या था जो आपने मतलब, which you made a decision to leave back, which was not so easy for you to do it? यार, or you know, like, how do you filter people? How do you filter the right people? You know, because that's kind of very important when you grow up in your journey. You need to know, like, आप line कहाँ draw करें या कैसे draw करें, अंदर से. यार, सबकी लाइफ में होता है यार. Raise your hands if you are on social media. I think everybody watching this, I'm pretty sure सब IWD पे तो everybody's on social media. My second question is, raise your hand if you're on social media and you have seen a comment out there which has been negative, which you have not appreciated, which did not come out कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है, right? By definition, I am on social media, right? And so I think it's taking that step and realizing social media does not define you. Although I am the champion of social media, right? Social media can be as brainless as people sitting behind computers and commenting on your work. And when you know the intentions of your work are so pure, so good, you should not be, you know, उनसे down होने का कोई फायदा ही नहीं है. तो जब आपको, और ऐसे ही लाइफ में लोग भी आते हैं, इट्स नॉट ओनली सोशल मीडिया. जब आप सुबह उठ रहे हो और आप स्माइल कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल डे, आई थिंक आपकी लाइफ में, तो देन यू आर कनेक्टिंग विद द राइट पीपल. अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है और वो आपको एक कमेंट याद आ रहा है कि किसी ने आपको ऐसा कुछ बोला था, या किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोला था, या आपकी पीठ पीछे कुछ बोला था, you need to get rid of those people out of your life. मैं आज सुबह उठी, I was very excited to look forward to this session. Ayesha and I exchanged some WhatsApp messages, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. It was so positive, right? So you need to find that those right people and talk to them more and leave behind the people जिनसे आपको बात करके नहीं अच्छा लगता, basically. And that's my funda. Very true. ये आपका फंडा है ये ऐसे. Like even मिस सुनीता जो है ना, ये मेरी मेंटर थी पहले जब मैं स्कूल में काम कर चुकी थी. तो विंचेस्टर में गई, एकदम बोंगी मामी हो गई थी मैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा था, बट शी वाज द वन
who mentored me so well. और मेरे को मैथ्स तो समझ ही नहीं आता था, फिर बोली आयशा किसी दिन मैथ्स तेरा फोटे होगा एंड तेरा लेसन प्लानिंग तो तू बाएं हाथ से कर देगी। वो तो 1 साल के अंदर जैसे उसने बोला ना, मैं बोली इनके मुंह में दही गुड़ शक्कर सभी डाल दूं मैं, जिस दिन ये सच हो जाएगा, और हुआ थोड़े महीनों के बाद। So I was pro at maths, और मैथ्स के लिए मुझे बाहर से VVIP ऑब्जर्वेशंस करने के लिए सब आते थे। So this woman ना, she knows कि वो कैसे उसको किसी को मोटिवेट करना है, आगे जाना है। And I was like, she could have helped me. इनको लेसन प्लानिंग आती है नहीं, she would give ideas, बोले कि जाके करके आ वापस। And I was like, मैं पिस्ड ऑफ हो गई, मिस आप कर सकते थे 2 मिनट में काम, मैं 1.5 घंटे से कर रही हूँ वही काम वहां पे। Then she said, I'm training you, teaching you, ताकि ये नॉलेज तुम बाकियों को पास करो। नॉलेज पास किया जाता है, मैं कर सकती हूँ 2 मिनट में आयशा, मेरा कुछ नहीं है, तू सीखेगी नहीं इससे। So you know, ये she is the mentor यहाँ पे, जिससे मैं I held her, मेरे दिल के करीब भी बहुत है वो, इसलिए वो उनके पास मेरे को मौका मिला था आपके बारे में बोलने का, एंड देन आई शेयर्ड अबाउट यू। तो आज आई फेल्ट सो नाइस कि वो आके बोल रही है ऐसा आयशा ने बोला आपके बारे में, मुझे अच्छा लगा मिस सुनीता। सो थैंक यू सो मच मिस सुनीता, एंड मिस सुनीता इज हरसेल्फ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, वो भी हमारे इसमें गेस्ट स्पीकर रह चुकी है, उनकी जर्नी अनदर लेवल के अमेजिंग है। और या सिद्धार्थ हैं उनके साथ, जिनके बारे में वो अवेयरनेस क्रिएट करती है, स्पेशल नीड चाइल्ड, जिनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है और स्ट्रॉन्ग बन रही है। इमेजिन करो एक वर्क लाइफ में हो, इतनी स्ट्रेस्ड हो तुम खुद ही, और तुम्हारे पास एक स्पेशल नीड का बच्चा है। हम लोग सोचते हैं यार घर में जाके ये करना है, ये करना है, ये करना है। शी इज अ वुमन कि इतना बियॉन्ड जाती है अपने बच्चों के लिए, फाइट करी अपने करियर लाइफ में इसके लिए, एंड टुडे शी इज देयर वेयर शी स्टैंड्स, एंड आई लव यू मिस सुनीता। Thank you so much, Ayesha. बनता है हमारी मिस सुनीता के लिए। Thank you. It's really grateful, and it really, like rightly said, Reema, it is nice to connect with strong people, because they keep continue making you stronger. That the power of women is so important. That's why I was very much looking forward to today's talk from you. I told, I mean, anything I can miss, I should just come for the session and learn your way of handling things. Thank you, yeah, thank you so much. You are an inspiration to me. मुझे आपकी story अभी जो आयशा ने सुनाई, hats off, yeah, you are one strong woman, basically. You know, it takes a lot of effort to come out and take that step of telling the world the story is, and you are amazing, by मतलब seriously. Looking forward to meeting you personally. Absolutely, we should absolutely. जी मिस रीमा। Okay, so first is follow your dreams. Second is surround yourself with the right people. And my third one is give back. You know, हम सबको पैसा कमाना है. I'm sure we are in our own favorite jobs. We are doing it, and giving back का सबका अपना तरीका होता है. I think this Be Happy Homemakers giving back. I do my own way of giving back, but give back and take that step back. I have recently, I think जो कुछ लोग जुड़े भी हैं उससे, इस ग्रुप में भी जुड़े हैं. We are going to the Majlis launch on 14th of June, which is absolutely a safe place for women fighting cancer. And I'm very I'm very open. I'm doing this initiative for my mom, who I lost to cancer, so the cause is very close to my heart. But that is my way of giving back. Yeah, अगर मैं IWD से थोड़ी सी लड़कियां जोड़कर हम एक special morning create कर सकते हैं for that strong women, it is my initiative to give back. And your way of giving back can be completely different. But give back, क्योंकि जब आप वो step लेते हो ना, वो जो रात को नींद आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है. Yes, absolutely. क्योंकि आपने किसी की लाइफ में एक डिफरेंस किया है. क्योंकि मे बी यू आर प्रिविलेज्ड इनफ कि अगर आप एक मॉर्निंग और थोड़ा सा खाना या थोड़ा सा वहां पे कुछ वर्कशॉप कर दोगे, तो शायद आपको उतना फर्क ना पड़े, बट उन लोगों की लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है. The motivation they get, it's not only the physical time, it's the mental stress and mental health benefits they get from spending that morning together. So I do a lot of work. I work with very big brands. Yeah, we try and give them a platform to join IWD, promote themselves on IWD. But मेरे को वही होता है कि is there a way I can help somebody through the process who really needs help, who really can benefit from that little work that I'm trying to do. And I would urge everybody on this platform to find your cause. Basically, this cancer, female cancer, is sort of my cause, but आपका कुछ बहुत different हो सकता है. And you will
अगर आप वो थोड़ा सा भी उसके लिए काम करोगी ना, you will feel connected to it and you will feel happy. And when you feel happy, तो आप अपना real जो काम करते हो, रोज का काम करते हो, you will actually give more in it. So I think I actually I get emotional talking about cancer because it's close to my heart. But this is sort of my third funda in life, that give back the way you can. Yes. You know, you don't need to donate a lot of money. A lot of times you do not need to donate a lot of money. I'm giving back my time, and that is my way of supporting the cause. That emotional Sometimes like, connection time is more important because you know there are a lot of people who give money, but there are not many people who actually give go time, there, yes. stand there and do that work. So even I'm associated with Anganwadi in Delhi because my mom does it. So every year on everyone's birthday or any death anniversary, we collect the money, we put it together, and whenever we go back to Delhi or someone goes, so Anganwadi is basically an organization who has crutches for labor's children. So when moms like maids, daily workers, construction workers, ये लोग जब काम पे जाते हैं, तो there is no safe place where their kids can be. So Anganwadi is run by few retired ladies who actually, because बच्चे बाहर चले गए हैं, husbands have retired, pensions हैं, so they come together to run these Anganwadi things in Delhi, जहाँ पे laborers के बच्चे आके they spend the day, so that the moms can go to work peacefully. And you know how crime condition in Delhi is. So Anganwadi is kind of a safe haven for their kids where they can, you know, stay the day, eat, have. So we generally, what I do is I prefer giving bags, books, and school stuff to them every year. So this is my way because even I believe in community living and giving back very strongly. And thank you, Reema, for pointing this out because yes, everyone needs to give back. Yeah. And that is how the society progresses. Yeah. एंड भावना, ये जो ग्रुप में अभी जितने लोग हैं ना, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, ये सारे वही पर्पस से हैं, यू नो, करते हैं सारे, लेकिन अपने को कुछ और एक्स्ट्रा करना है. दिया से परसों बात हुई, यही बोलती है. आलिया भी यही बात बोलती है. रीचा, पूनम हो, ये सारे यही ना, वही इसमें इवन सादिया भी है हमारे इसमें. यही सब थॉट प्रोसेस है सबका, कि तभी शायद ये लोग कनेक्ट होके आए हैं यहाँ पे आज के दिन और सुनने के लिए रीमा को कि क्या बोलने वाली है करके, you know. I would like to share my thoughts, Ayesha. I completely agree with Reema that we really need to give back to the society in whatever tiniest way we can, you know, and that's the whole purpose why I also begin my journey, because education can, you know, that is the base. Nothing better than education or giving your little time to an orphanage or a you know, old age home. It really helps them a lot. For us, it's absolutely nothing. Yeah, nothing. Just go for 1 hour. It makes hardly any difference. Probably we must be scrolling on social media, but that 1 hour when you spend there, that definitely gives them a positive energy, and it makes a lot of difference. Similarly, we are connected with one of the NGO which is there in Pune. You know, these are it's like a hostel. They provide accommodation and food to hostel students, like who cannot afford the university hostels, or they cannot stay as a paying guest. These are those farmers' kids who come all the way from, you know, Maharashtra to study in Pune. Pune is a hub of education. So they come there, but they don't have that kind of money where they can spend on their food, or they cannot spend on their accommodation. So there is a building which is built it is called a Samiti in Pune, and I'm so proud. My mother-in-law is every day she goes there. She's almost 70 years old, but she goes there she goes there every day. She spends her time. Even my father-in-law was he's no more now, but then he used to do all this. So it gives such a pride feeling when you see, you know, people are ready to do all kind of things, help each other and grow further. Of course there are discouraging people, but we need to cut them off. So I completely agree with you, Reema. We have to give back to the society in whatever form we can. And I think it's a very good example for our kids, because our kids look at us
what Yes. mama is going to do, what father is going to do. So, you know, that also builds a good role model for them probably to follow the same footsteps, because parents, nobody else, but they see parents, what they're doing, how they behave. As role models. Yes. So I think I completely agree. And Ayesha, you're doing a wonderful job. मुझे शर्म आ रही है, रुको यार तुम लोग. शर्मा लो. So yeah, Hi, there was hi a Reema, situation. hi Ayesha. Oh, yes. Hi. Yeah, I could manage to join it. Finally, yes. Hi. Yeah, even I agree to this giving point, of course, because I am very active as a social worker. Like the organ donation is Organ donation. Yeah, I'm into organ donation since last like 11 years, and I'm one of the ambassadors like of the U.A.E of a foundation. So like I've faced like so many, you know, like you'll say critics that, oh, organs dena hai, kya hai, cut foot kar denge kya. It's very difficult, and like, you know, I've seen like a very close friend of mine whose both his kidneys are failed, and like I failed, you know, because I've miserably failed at that because I could not get him a donor, and he's fighting for his life right now. And like last week only I met him, and then he was like almost in tears. Peenal, mujhe jeena hai, koi kyun nahi de raha hai? And like I feel so bad, you know, like he's deteriorating, like, but his willpower is very strong. So it's like 3 years he's pulled it off. So it's like in a small way also, I know I cannot do anything on that way, you know. Financially, I cannot do anything, but this is the only cause like I can, you know, like selflessly do. So it's really important to, you know, support in some or the other way, you know. This is how we can like at least save lives. That's what I feel. Yeah. It's a unique concept भी है ना, ये अपना पहले से है, लेकिन अवेयरनेस उतना नहीं है ऑर्गन डोनेशन का. थोड़े लोग बोलते हैं, हाय अल्लाह मेरे को दर्द तो नहीं होगा. मैं बोली वो मरने के बाद करते, दर्द कहाँ से होगा तुमको? पहले थोड़ी ना डोनेट करो. Exactly. इतने सारे मिथ है, इतने सारे मिथ्स है, you know, like people, उनको ऐसा लगता है कि अभी प्लेज करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे कि अरे अभी कॉल आ जाएगा क्या, किडनी चाहिए लोगों को, अरे आके किडनी देखे जाओ. बोला ऐसा नहीं होता है, हम आपको अभी दिल देने के लिए नहीं बोलेंगे, किडनी देने के लिए नहीं बोलेंगे. इसकी अवेयरनेस करनी है, लेकिन ना पीनल ऑर्गन डोनेशन की भी. इतने लोग हम लोग हेल्दी लोग हैं ना, कभी अगर मरने के बाद क्या करने के, वो वहीं पे सड़ जाएगा अंदर. एग्जैक्टली, कहाँ लेके जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खा लेंगे बैठ के, उसके बैक्टीरियाज खा लेंगे वो सारे, उसके बदले किसी को दे वो लोग यूज कर लेंगे बेचारे. So this is something very nice, and I wanted to talk इस बारे में. And actually for this, Ayesha, I would say for this organ donation and all, no, first we need to educate the people. कुछ लोग ना they apprehensive, even if, you know, they have in mind, पर कुछ वो strength नहीं आती लोगों को to go for it. तो पहले थोड़ी education हो जाए लोगों में, तो you can form a group wherein, you know, people educate themselves. क्या organ donation is a very good cause which gives life to another individual to live his life or her life. Yeah. In fact, we keep doing sessions like हमारा foundation जो है, like it's mainly it's Mohan Foundation. I'm sure many of you must have heard. Our founder Dr. Sunil Shroff was on KBC also with Mr. Bachchan, Ritesh Deshmukh. Yeah, so like we have in our foundation, like we keep doing social awareness. कोविड के बाद थोड़ा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाया है UAE में करना. हम लोग ऑनलाइन एजुकेट करते हैं लोगों को, you know, like कि क्या है ये सब, क्वेश्चन आंसर्स होता है ये सब, जस्ट कि भाई we never force, you know, but it's like spreading awareness कि भाई क्या होता है, at least समझो ये चीज को. We usually do that, you know, so it's like we do that even online. हम लोग करते हैं ये सब. That's good. हम बात करेंगे इस बारे में पीनल, और बाद में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह इस बारे में. और कोई है जिसको कुछ बोलना है हमारे रीमा को? Hi, देखा दिख रही है मेरे को. Yes, I have been raising my hand for quite some time. I thought I'll mention that. No, never mind. I realized that no, it doesn't have to be so formal, and yeah, it's a casual conversation. Yes. Let me just start speaking. And अभी मैंने इसलिए चुना कि I just will start talking because I connected very well with what Peenal said. I have lots to talk otherwise also. I'll really cut it short. But Peenal की जो requirement है, what she said is now immediate could be, and maybe I can try to help. I don't know how much of help I can be, but I really want to put my best to try. And then see, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा. जब इतने लोग कर रहे हैं, so I'm sure there will be something definitely work out.
for this person. So, Peenal, we can get in touch after this session, and I would like to know more about what is the requirement and where is the person and everything, and then I'll see if through my contact if I can help anybody. So just to give a brief introduction. Yeah, sure. Okay, I'll talk about with, basically. yeah, I'm sorry to whatever interrupt. yeah. Basically, no. In case of the kidney live donor, it goes only like immediate family can do it, or it's through the waiting list for it's it. Now in his probably family, he has like a little issue, like immediate family. His wife has just delivered a baby like 2 years back, so feeding cannot do it. Parents have health issues, so they cannot do. And for the normal pledged, the wait list is so long and the donors are hardly any donors, so he's facing more of issues. So now let's see right now. Yeah, I have been in the medical field for quite some time. I'm nowhere a doctor, or I've not studied medical at all. But I have been in the medical field because I work for medical insurance. So I have dealt with a lot of insurance companies, doctors, and everything. And from quite some time now, I have associated with a number of doctors and hospitals who also do sort of charity work and helping people a lot. So that is how I know that I have a good backup of the medical team and everything. So so that's why I want to see what I can help. So it's not just medical. Sure. I'll connect with you personally. Yeah, because I really want to see what I can do. If I can, definitely. Otherwise, we'll see. Sure. That's really great and kind of you. I'll surely get in touch with you, like connect with you. Yeah. No, I look for such opportunity, and that's how I got connected. So I have been a very silent member of IWD for a very, very long time. I've been reading and trying to see someday I will connect with somebody. But when I saw this Zoom session, then I thought at least let me, join this and see what's happening. So just a second. Yeah, thank you so much once again. Yes, anybody else? Reema? हाँ, हमारी आलिया उठाई हाथ. जी आलिया. Sorry. Rekha is I here. got disconnected. I'm not done yet. Okay. Okay, so thank you, Reema, Ayesha, everybody. I just saw this. Ayesha, I'm not sure. I think you are and some of the friends. I don't know anybody here except that Reema I have seen a lot many times, but I have not been connected. So yes, I am also in the same journey now, wherein I have quit my career, a corporate job which I was doing for more than 15 years to do something better for professionally as well as for the society. So that's where I think I've connected more to this group now. It's not just scrolling anymore; it is actively participating. So I thought that no, let me. I'm right now very casual and nothing. I just took my phone and doing my morning chores, and then I thought, let me attend, let's listen to it. And I didn't feel that I'm new here or I'm not connected or there's nothing formality. It's so. I feel like I'm already connected. And when I'm hearing people and when all of you lovely ladies talking so much and doing so much, I feel like where am I? I have to do much more. The thought of giving. Firstly, yes, I totally believe in a woman. When a woman supports another woman, we truly can do great things. That's what I truly believe. And yes, you have to give. You have to give back to the society. So so being in the medical field and having connect that way, let me see how I can take it further and how I can help. Regarding the cancer event on 14th of June, I truly want to be a part of it. I'll get in touch with Reema or whoever is the concerned person. I would like to know and I would like to be a part of it. And thank you so much, lovely ladies. This is just an introduction. I've not spoken too much about me. Maybe some other time. I don't want to take too much time. But thank you and all the best to all of us. And Peenal, just get in touch with me. I don't know how I can share my number. Yes, sure. I'll surely get in touch. Sorry? No, you can drop it in the chat box. Chat. Okay, I'll do it right now. Okay? Yeah, सबको मिल जाएगा number. Over to all of you. I am actively listening. Thank you, Rekha. और कोई? जी आलिया. Yes, Ayesha, actually मुझे मतलब आज कोई query नहीं है. हाँ, दिख रहा मेरे को. Reema has spoken so aptly and described everything so well. क्या कोई query की जरूरत ही नहीं रही. But I would just like to add in where Reema has told that give back. उनके जो agendas है, जो morals of life है, they are really very insightful and inspiring for all of us.
तो ये जो गिव बैक की चीज है ना, मैं यहाँ पर इतना ऐड करना चाहूंगी कि सी एवरी टाइम गिव बैक बोले तो एक इंसान के जहन में थॉट होता है कि मनी, पर एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट मनी. इवन इफ यू ब्रिंग अ स्मॉल, you do a small kindness act, like bringing a smile on somebody who's very sad or going through a tough time, तो उसके साथ अगर आपने टाइम स्पेंड कर लिए, you are a good listener to them and you bring a smile on their face, that is also giving back to the society. तो मतलब मैं बोलना चाह रही थी सब लोगों को कि don't just think that giving back is only just concerned with monetary, providing monetary assistance to anybody. You can just help out somebody, even if you are, say, some of your friend calls you and says that I am having something tough going on in my life. तो अगर आप बोलो okay, I am there, come, we'll have a chat, listen to them, तो वो भी एक तरीके का is giving back to the society. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि रीमा has brought this point in front of everyone. तो inshallah everybody will try to imbibe this in their lives in any way. मैं आयशा से हमेशा वो भी बोलती हूँ, अगर हम एक छोटी सी स्टोरी बुक पढ़ के एक बच्चे को भी खुश कर दे, that is also giving back to the society and making a very happy moment for the child. तो वही, it's really worth listening. It was really worth listening और बहुत insightful learnings मिले. Thank you, Ms. Reema, for your insightful talks, and all the best to IWD for more, soaring wings throughout the globe. हाँ वो तो है, IWD तो अभी शाइन होने का बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है, लंबी पिक्चर. अभी तो उसने काम करना शुरू किया जरा जरा उस पे, वो जरे कोई इतना है उसका आउटकम, तो अभी तो बाकी है पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर दिखाने वाली है रीमा, एंड इंशाल्लाह वी ऑल आर देयर विद हर इस जर्नी में. एंड अभी हमारे बर्थडे गर्ल कहाँ गई, दिख रही नहीं, अभी उधर ही है. हाँ बर्थडे ने मैं तुम्हारे लिए गाना गाने वाली थी. अच्छा भावना, तुम्हारे बोलने के बाद हम गाना गाएंगे और फिर हमारी रीचा जो है वो गाना डेडिकेट करेगी रीमा के लिए. रीमा आज ना लंबा गया है वैसे, आई एम सॉरी, बट बहुत लोग एक्साइटेड है तुम्हारे को लेके, बहुत तुम्हारी बातें सुनने के लिए और शेयर करने के लिए. सो प्लीज और थोड़ी देर हमारे साथ बैक कर लेना. हाँ म्यूट हो गई तुम. हाँ रीमा है नहीं है? रीमा नहीं, रीमा है, म्यूट में है वो. रीमा भी है, रीमा भी है और रीवा भी है, इसलिए मैं म्यूट हो गई थी. बट एब्सोल्युटली मुझे बहुत अच्छा लगा यार. अ लॉट ऑफ द पीपल रिलेट टू गिविंग बैक एंड आई एब्सोल्युटली अग्री आलिया कि गिविंग बैक कैन बी इन द स्मॉलेस्ट वे पॉसिबल. जस्ट यू नो इट इज योर वे ऑफ गिविंग बैक. तो ओवर टू यू आयशा, मैं सुन रही हूँ गाना गाएं. हैप्पी बर्थडे गाना है? नहीं, भावना को कुछ बोलनी है उसके बाद. एक मिनट. अच्छा भावना, ओके. Yeah, this is for Reema. Actually, Reema, I wanted to say कि तुम्हारी जो ये मजलिस morning, the thing that you said, you're going to have it on 14th June. Can you share details so that you know if someone wants to join and like I would want to join, I can. Yeah, I can absolutely share the details. But वही मैं बोल रही हूँ कि like every IWD event we are so full already. We have like about 80-90 volunteers. तो मैं and there is a limit to the number of people I can take at the venue क्योंकि उनके सिर्फ 30 girls हैं. तो I'm happy to share the details. अगर ये बहुत अच्छा हुआ तो हम फिर से जाएंगे and we will do more of these. My aim is to do one event with them every quarter to keep it sustainable. So I will share this offline with you, Bhavna, on how you can get involved. Sure. Yeah. Actually यही था मेरा भी. भावना ने रेज किया, मैं बोल रही थी कि वी हैप्पी होममेकर्स में डाल दो, लेकिन आई थिंक जैसे वो नंबर Probably, you know, like already by IWD तो हो सकता है हम लोग एक अलग से भी, क्योंकि because there is a limit too, so we can also do something extra, you know. Absolutely, I can connect you to the center. आप अपने आप से जा सकते हो अलग से to give your time and energy, whatever you want to do, basically. So absolutely, you can do it. Thank you so much. Thank you. Now please continue. That was only question I had. Yeah. Where is रीचा? रीचा का गला बहुत सुरीला है, मेरे को मालूम नहीं बाकी कितने लोगों का वो मेलोडियस वॉइस है. मेरा तो बड़ा बेसुरा है, बातें अच्छे कर लेती हूँ बट गाना मतलब खून टपकेगा सबके इसमें से. So girls, many happy returns of the day, dear Bhavna. Thank you. हाँ भावना, Happy birthday भावना once again. गाना तो नहीं गाऊंगी, ऑफिस में बैठी हूँ. लेकिन अरे सब मिलके गाते हैं कुछ तो. मेरा थोड़ा हाँ कम कर शुरू करो, स्टार्ट करें.
बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भावना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी Thank बर्थडे। अच्छा काम करी रीचा, हैप्पी बर्थडे। बहुत अच्छा गाया यार। उसके Everyone, लिए thank you so मालूम। much. हैप्पी बर्थडे भावना, लव यू। Thank you मैं so नाराज नहीं much. हैप्पी बर्थडे भावना जी। हैप्पी बर्थडे डियर। जी जान। और हमारे रीमा के लिए एक गाना रीचा, तुम्हारे Yes, Richa. मस्त वाले अंदाज Yes. में। रीमा बिल्कुल, ये बिल्कुल। तुम्हारे लिए। First of all, thank you so much, Reema, for being here and इतना inspiring session के लिए we're looking, you know, आप इतना ज़्यादा आपके बारे में सुना है and really want to meet you in person. And आपका जो tips आपने दिया, besides following your dreams, your dedication, your hard work, the best thing that giving back. मतलब besides, you know, your आपका मेहनत के अलावा जो आपका the best thing is that कि a wonderful human. You're a wonderful human. So you know the karma plays. So hats off to you for being for doing such a fabulous job and really looking forward to meet you. So कुछ lines आपके लिए dedicate कर रहे हैं. So just okay. So please आप लोग साथ में गाइएगा सब, अच्छा लगेगा. मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह किरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये रोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे. Now this one is for you, Reema, especially. कुछ पाने की हो आस आस, कुछ अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार, हर दरिया को जो आर पार, आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, हर मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी. Thank you so much. Thank you so much. Oh my God, what an amazing voice you have, Richa. Next singer Thank award you so किसको देना है हमको पता है रे आयशा. Thank you so much. Thank you so much, Reema, for being here, and glad so much to learn from you. And really looking forward to meet you soon. Ayesha, जल्दी मिलना है अब हम लोग को. You're mute. You're on mute, Ayesha. You're on mute. हाँ. Ayesha mute पे है. म्यूट में रह के मैंने इतनी बकबक कर ली, अल्लाह. तो हाँ, नेक्स्ट सिंगर अवार्ड तो मालूम है, तभी इसको इतना पुश कर रही हूँ मैं आगे जाके कि करो गाना, गाना है तुमने को, तो हर जगह गाना गवाती हूँ. वो नहीं होते टिपिकल मम्मी पापा, इंग्लिश में बात करो, अभी गाना गाओ, आंटी के सामने डांस करो, गेस्ट आएंगे तो रिचा को ये मारेंगे किसी दिन मेरे को. बट देन सुना ना, इसका आवाज मस्त है ना, तो बस ना रिचा, देखा सब तारीफ करे, तुम्हारी चैट बॉक्स भर गया वहां पे. तो थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू रीमा. रीमा तुम बताओ तुमको कैसा लगा, एंड या तुम्हारे थॉट्स एंड देन दैट्स.
या मुझे बहुत अच्छा लगा. I mean, absolutely my honor, my privilege to be a part of this today. जब आयशा ने मुझे बोला था, आयशा मैं क्या बोलूंगी आकर, तो उसने बोला कोई बात नहीं रीमा, आप अपनी कहानी सुना देना, आप शेयर कर देना, ऐसे जैसे वो बोलती है. But I think more than me talking, I felt connected to all of you, and more than me just sharing my journey or the way my rules are, मुझे आप लोगों के व्यूज सुनकर, आप लोगों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा. Because मैंने भी काफी कुछ सीखा है यार आप लोगों से, because all of you are strong women doing amazing lovely work in what you do. So as we say, more power to all of us, and together we grow. It was a wonderful session, and I'm really glad like I could join it. थोड़ा सा time निकाल के, क्योंकि meeting मेरी postpone हो गई है, तो I could sneak in inside. Yeah. वाओ पिनल, हमको सुन के बहुत अच्छा लगा. एंड तब बीच में स्निक करते रहना, कोई बात नहीं है अपने को. मैं तुम्हें रिमाइंड नहीं वैसे तो I told you जून जुलाई मेरा vacations होगा, so जून जुलाई तो I'll be like available. Yes, इंशाल्लाह. So thank you so much girls ज्वाइन करने के लिए, and thank you so much रीमा आपकी स्टोरी बताने के लिए, आपके रूल्स बताने के लिए. And I could totally relate. काफी सारी चीजें मैं रिलेट कर पाती हूँ मेरी जर्नी आपकी जर्नी के साथ. हाँ अलग अलग ही है वो, बट मैं ज्वाइन करती हूँ, कोशिश करूँ कि अब से वो ऐसे हो जाए करके. एंड #women supporting women, प्लीज ऐसे ही करते रहना और हम सबको साथ लेके जाना तुम्हारे. एंड हम लोग भी हैं, कभी तुमको जरूरत पड़ी हम सबकी तो हम सारे हैं यहाँ पे. या एंड आई लव यू गाइस. बिल्कुल मिलके बहुत अच्छा लगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मंडे को. और एक मंडे कौन सा डेट है हमारा, वो 30th में था. नेक्स्ट सेशन हमारा 30th मई को है. सादिया तारीख ज्वाइन करने वाली है. 23rd. Yeah. Next week. सच्ची नहीं 30th it is 30th. देखिए आलिया मेरी प्रॉपर फॉलोअर थोड़ी ना, एडमिन है मेरी. It's fortnightly ना रिचा. हाँ एवरी ऑल्टरनेट मंडेज होता है. तो नेक्स्ट हमारी सादिया तारीख होगी. वो जो ग्रुप है उसमें इंफॉर्मेशन हम देते जाएंगे. ठीक है गर्ल्स, मिलते हैं इंशाल्लाह सून. Have a lovely day. भावना enjoy your day. Love you guys. Take care. Bye. Bye bye. Bye. Thank you. Bye.